मुझे लगता है कि YouTube रिव्यूअर्स और रिव्यूअर्स इन जनरल इस फिल्म के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने से डरते हैं या कतराते हैं। द मूवी इज स्टिल यॉन इंड्यूसिंग ड्यूरिंग द मिड। लोगों के मन में एक डर है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के बारे में डिफरेंट या नेगेटिव ओपिनियन होने का, क्योंकि उनको लगता है दैट दे विल बी परसीव्ड एज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मूवी और लैकिंग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। बट मुझे ये फील होता है कि नोलन ने ऑफ लेट अपने ऑडियंस को बॉर्डर लाइन अब्यूज करना शुरू कर दिया है। I'm probably too late for this review, but I'm going to do it anyway. I am a Nolan fanboy, and with being a great fan comes a great bias. हम कमियों को इग्नोर कर देते हैं और थोड़ी अच्छी चीज की भी हाइप बना देते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ओपनहाइमर बिल्कुल ओपन माइंड से देखूंगा, और मैंने देखी भी। I tried to let my bias not influence my experience of the movie. Oppenheimer मूवी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में, जिसने 1940s में साइंटिस्ट की एक हैंडपिक टीम के साथ अमेरिका के लिए एटम बॉम्ब बनाया, जिसे जर्मनी पर यूज करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने का प्लान था। बट बॉम्ब बनाते बनाते इतनी देर हो गई कि उससे पहले ही हिटलर ने सुसाइड कर लिया और जर्मनी ने घुटने टेक दिए। बट अब अस्त्र तैयार हो चुका था और जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी पर। इसमें ऑलमोस्ट 2,20,000 लोगों की डेथ हुई ओवर द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। इतनी डेथ देखकर ओपनहाइमर को बहुत गिल्ट फील हुआ और उसने हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब से अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, उसको ना बनाने को लेके कैंपेन किया। ये और उसकी बढ़ती लोकप्रियता देख के कुछ जलने वालों ने कॉन्स्पिरेसी करके उसे कुछ ऐसा फंसाया कि ये मूवी एक तरीके का कोर्टरूम ड्रामा बनकर एंड हुई। मूवी में सारे एक्टर्स सीजन्ड हैं। हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस भी की है। किलियन एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर आर ऑफ कोर्स क्लास अपार्ट। बाकी एक्टर्स ने भी काफी अच्छा काम किया है। Even the biggest nitpickers would have a hard time finding faults in the individual performances. Jean Tatlock's character lacked depth. The spark between Oppenheimer and her was missing. She just shows up in the movie abruptly at a party, and then there was an awkward, out-of-place sex scene which involved a shlok from Gita. The scene seemed pointless because the intercourse did not seem passionate enough, and that was no place to be reciting shloks from Gita. Left a bad taste. Anyway, Oppenheimer और Tatlock के बीच में अट्रैक्शन क्यों हुआ? Why was he behind her even though she kept throwing his flowers away? और अगर इतना प्यार था तो शादी क्यों नहीं की? We never get answers to such questions. This angle remained a loose end and I was not able to make any sense of the relationship. एक बोरिंग सबप्लॉट जिसे सिर्फ चीप सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए डाला क्योंकि this movie was a biopic. Oppenheimer married Kitty, who was in a marriage wherein she was not happy with the husband. But इस मैरिज में भी तो यही हुआ। Oppenheimer was always busy. Oppenheimer was having an affair outside the marriage, but Kitty stood like a rock beside Oppenheimer, unlike her previous husband. She hated being a housewife, but Oppenheimer के साथ भी वो as a housewife ही रह रही थी. In fact, in one scene, she is fed up with babysitting their own child. She was literally going through the same stuff in this marriage like her previous marriage, but she still stuck with Oppenheimer. Why? I don't know. This was never answered. We were just supposed to accept that this is how it is. Although Blunt and Matt Damon performed a great job, they were confined within their characters, like other actors too. बाकी सब actors चाहे कितने भी मंजे हुए हैं, the characters they played did not have a huge role. Kitty could be played by Scarlett Johansson and Gary Oldman could play General Groves, and people would still love their performances because the characters had very loose definition and not much to do. Except two brilliant scenes where Blunt was blunt, she did not have much. Similarly, Rami Malek appeared in 3 scenes. He was no Freddie Mercury this time, just a cameo so that he can be shown in the trailers and his name can be displayed in the cast, just to create a hype, in my opinion. Sound design and background score was half decent at max. Could it have been better? Yes, of course. Did it do its job? Barely. This is probably the most subjective aspect of the movie. Sound design and background music has always been an invisible actor in the Nolan movies, so the expectations are always high. By his standards, the sound mixing was borderline bad. The background score was too loud at times, and occasionally dialogues were in such low volume that one has to resort to reading subtitles, which is disconnecting. जिसने 11वीं में साइंस ली है उसके लिए मूवी में कुछ भी अनोखा नहीं है. It is a fairly straightforward movie. The first half hour of the movie takes you to a space I never knew I would go. लखवीर सिंह, मंजीत कौर और प्रदीप याद दिला दी.
नील्स बोर, रिचर्ड फेनमैन, हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन जैसे कैरेक्टर्स को सामने देखना gave me goosebumps. And to look at these characters taking lectures, interacting with each other, बहुत ही surreal था मेरे लिए. In the middle, I felt कि मूवी ने काफी grip lose की. One cannot run 5 parallel plots and expect the audience to not lose track. Oppenheimer का love track, उसका communist ideology exploration वाला track, Lewis Strauss की hearing, Oppenheimer की security clearance की hearing और Manhattan Project की preparation और इस preparation में further subplots. All of this happened simultaneously in the next 2 hours. Look, many people worked on and created the bomb. And I was interested in Oppenheimer's life up until the extreme amount of screen time devoted to these parallel plots and subplots that sucked my will to live out of my eye sockets. It's not what he's remembered for, nor should it be. All this complication of parallel running plots and consistent bombardment of new characters every few minutes just lost me in the middle. I really don't understand Nolan's obsession with non-linear storyline, especially when it's clearly not needed. It is one of those movies which would have made way more sense if the story was told in a linear manner. I feel कि इस मूवी कट चॉप तरीके से बनाने के चक्कर में बस फालतू में कॉम्प्लिकेट हुई है. फिल्म में एक एस्पेक्ट है रेस फॉर टाइम अगेंस्ट नाजीज फॉर बिल्डिंग द नुक. मुझे पूरी मूवी में 1 मिनट के लिए भी कोई एंजाइटी नहीं हुई. कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि टाइम की कोई कमी है. ग्रोव्स और ओपनहाइमर बातचीत करते थे, एक दिन फाइनल करते थे एंड बैंग नेक्स्ट सीन में वो दिन आ गया और काम भी हो गया. There was no pressure to deliver on time. My point is that an opportunity was missed here. Instead of focusing so much on the soul-sucking security clearance hearing mid-movie, the lack of time and the actual challenges faced while making the bomb could have been shown. I feel a conventional filmmaker would exploit this line and Nolan missed an opportunity there. The last half hour of the movie is its most beautiful and yet weakest part. फिल्म सिक्योरिटी हियरिंग और ल्यूइस स्ट्रॉस हियरिंग के बीच में टू एंड फ्रो होती रहती है. एक कन्वेंशनल फिल्म मेकर शायद ओपनहाइमर को एंटी कम्युनिस्ट विच हंट का इनोसेंट विक्टिम दिखा देता, but Nolan is not conventional filmmaker. He exploits the moral complexity of the situation. But ये सब करने में screen time 3 घंटे से ज्यादा होने को हो जाता है. And this is where I feel Nolan's dramatic instincts fail him. Inception, Interstellar, Dark Knight Rises, Dunkirk, इन सब movies के emotionally shattering climax रहे हैं. But Oppenheimer is emotionally soft and limp. अगर आखिरी आधे घंटे के कोर्टरूम ड्रामा की जगह हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग और डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट होता, जिससे ओपनहाइमर के गिल्ट से मैं शायद बेटर कनेक्ट कर पाता. Although Nolan did his best to display Oppenheimer's moral conundrums and guilt during his post-bombing speech, but I feel it was just not enough. I did not connect to J. Robert Oppenheimer at all during the whole film. And this speaks nothing about Cillian's acting. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि Cillian did a brilliant job. It is more to do with how his character was written in the movie. फिल्म के शुरू में ही उसने अपने टीचर को पॉइजन करने की कोशिश की with no moral burden. मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए जू साइंटिस्ट की पूरी टीम इकट्ठी की, which included एडवर्ड टेलर, आइजैक रैबी, रॉबर्ट सर्बर, लिली हॉर्निक, रिचर्ड फेनमैन और लियो ज़ाइलार्ड. इन साइंटिस्ट का मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आने का अंडरलाइंग मोटिवेशन वाज एंटी-फैशिज्म. इसलिए जर्मनी के सरेंडर करने के बाद some of these scientists started to have moral reservations about using the bomb in Japan. This leaves their motives murky. Apparently, Oppenheimer saw himself as fighting against Germany rather than for America. जैसे ही जर्मनी का सरेंडर हुआ, Oppenheimer का वॉर में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और मोरालिटी आने लग गई. He was okay if the bomb was to fry Germans, but not Japanese. And let me remind you that Japan had already bombed Pearl Harbor. Where is the patriotism, bruh? His definition of morality in the film kept dwindling based on his convenience. In light of his moral complexity shown in the film, I found it really hard to relate with his remorse. I didn't care any more for Oppenheimer by the end than I did at the beginning. It just fell flat. मुझे लगता है कि YouTube रिव्यूअर्स और रिव्यूअर्स इन जनरल इस फिल्म के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने से डरते हैं या कतराते हैं, क्योंकि नोलन हैज क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल हाईब्राउ एज हिज ओन. बट मुझे ये फील होता है कि नोलन ने ऑफ लेट अपने ऑडियंस को बॉर्डर लाइन अब्यूज करना शुरू कर दिया है विद इंटेंस एंड कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन्स, इंट्रिकेट डायलॉग्स, chaotic editing or sound, garnished with impressive visuals, which may lead audience to believe that something profound is happening, when, in my opinion, it may not be the case. There appears to be a shift in focus from the story, characters, and audience experience to Nolan's personal objectives and the need to assert himself against his viewers.
और इससे लोगों के मन में एक डर है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के बारे में डिफरेंट या नेगेटिव ओपिनियन होने का, क्योंकि उनको लगता है दैट दे विल बी परसीव्ड एज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मूवी और लैकिंग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। मुझे यह मूवी टेनेट से थोड़ी बेहतर लगी, बट नॉट एनीवेयर नियर नोलन्स बेस्ट वर्क। इंसेप्शन और इंटरस्टेलर में नोलन फाउंड हिज गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ बीइंग just enough complicated to challenge the audience and being just enough intense. Inception, Memento, Interstellar, Prestige, all such movies had strong underlying human emotions like love and revenge. Oppenheimer में मुझे वो strong emotion कहीं नहीं दिखा, ना लव लाइफ में, ना मैरिड लाइफ में, ना पेट्रियोटिज्म में, ना एंटी-फैशिज्म में और ना ही रिमोर्स में. The movie just kept waffling about unimportant things without exploiting any emotion completely. Having said all this, would it get this much hype if it was not star-studded and didn't have Nolan at helm? I doubt that. Would this movie seem as good as many people are claiming if this was made by some other director? I doubt that too. Anyway, मेरे हिसाब से this movie is a solid 6 on 10. The film looks beautiful visually, acting was top-notch with some bad sound mixing and jarring editing here and there. The movie is still yawn-inducing during the middle, where a lot is happening and missing any detail derails one's attention. So in that sense, this film itself is a chain reaction. आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताना. And if you disagree with something or you think I missed something, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना. Bye bye.